Okay, so let's start in Newton's laws of motion. Today, first we will study the equilibrium of concurrent forces. Concurrent forces. Concurrent forces का equilibrium. Basically, equilibrium अगर दो forces का हो, in that case, the two forces must be equal and opposite. Suppose this is F1 and this is F2, then this implies F1 must be equal to F2. Magnitude wise, the two forces must be equal so that we may bring this point to equilibrium. We may have the second case in which at one point we have three forces acting, F1, F2 and F3. And if we have such a situation, then what will be the condition of equilibrium? Let's understand. For this situation to become in the situation of equilibrium, the three forces, the vector sum of the three forces must be 0. It means, suppose this is F1, then this one is F2 and this one is F3. The vector sum of these three, F1 plus F2 plus F3 is 0. For any such problem, how we can solve such equations? Let's understand. One thing which we may do is resolution of the forces along the axis. है ना, ऐसे एक्सिस सेलेक्ट करें, तीन फोर्सेस हैं, अगर कोई दो परपेंडिकुलर नहीं है तो आपको कम से कम दो फोर्सेस को रिजॉल्व करना होगा. यू विल हैव टू रिजॉल्व एटलीस्ट टू फोर्सेस. सपोज दिस इज एंगल थीटा 1 and this is angle theta 2. So first thing you can do is to resolve the forces along, suppose, these two axes. We are taking this axis as x and this axis as y. तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व कर लें. And if we resolve the forces, what do we get? In this direction we get two components, f1 का cos theta 1 component और f3 का cos theta 2 component. So here we get f1 cos theta 1 and f3 cos theta 2. In this direction we get f1 sin theta 1 and we get f3 sin theta 2. So what are the two equations which we can write? We can write one equation as f2 equals to f1 cos theta 1 plus f3 cos theta 2. We can write second equation as f3 sin theta 2 is equal to f1 sin theta 1. So these are two equations which we have. Apart from this, we can solve these problems by one more method, and that method is called by Lami's theorem. By Lami's theorem. And that Lami's theorem states, I will erase this one, है ना, क्योंकि two forces are not very important for us. वो तो equal opposite होगा ही. We are trying to consider the second case जिसमें तीन forces लग रहे हैं. Suppose we have three forces. Again we are taking similar situation, f1, f2 and f3. Suppose we somehow know these angles as alpha, this angle as beta, and this angle as gamma.
ये नेमिंग हमने कैसे किया है, तो F1 के अपोजिट में जो एंगल है दैट इज अल्फा, F2 के अपोजिट में जो एंगल है दैट इज बीटा, एंड F3 के अपोजिट में जो एंगल है दैट इज गामा. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव नेम्ड दीज. अगर आप ध्यान से इसको देखें तो देखिए बेसिकली अल्फा जो है F2 और F3 के बीच का एंगल है. F2 और F3 के बीच का एंगल है. F2 को थोड़ा अगर आगे बढ़ाएं तो आपको ये अल्फा दिख जाएगा. दिस इज अल्फा. कैन यू सी दिस? दिस इज अल्फा. यस. सिमिलरली अगर F3 को आगे बढ़ाएं तो F3 और F1 के बीच में जो एंगल है दैट इज बीटा. और अगर F1 को थोड़ा आगे बढ़ाएं, F1 और F2 के बीच में जो एंगल है दैट इज गामा. अकॉर्डिंगली इसको हम लोग पाई माइनस अल्फा कह सकते हैं. दिस कैन बी सेड टू बी पाई माइनस बीटा एंड दिस इज पाई माइनस गामा. है ना, लीनियर पेयर से वी कैन इजीली डू दैट. तो आगे जो मैथ स्टूडेंट्स है दे विल स्टडी वन रूल जिसको कहते हैं साइन रूल. और वो साइन रूल कहता है a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c. ये है साइन रूल. अगर ये साइन रूल है तो सिमिलर साइन रूल यहां भी लगाया जा सकता है बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल. F3 है उसके अपोजिट में एंगल है पाई माइनस गामा. ये जो साइन रूल होता है वो कैसे ट्राइंगल के लिए होता है, लेट्स अंडरस्टैंड. ये एंगल A है, उसके अपोजिट वाले साइड को A कहते हैं, मतलब उसके साइड लेंथ को A कहते हैं. ये एंगल B है, उसके अपोजिट वाले साइड लेंथ को B से डिनोट करते हैं. ये एंगल C है, उसके अपोजिट वाले साइड को C स्मॉल c से डिनोट करते हैं. तो बेसिकली यहाँ F3 है, उसके अपोजिट वाला एंगल है पाई माइनस गामा. तो हम लोग लिख पाएंगे F3 बाई साइन पाई माइनस गामा. ये साइन रूल से लिख रहे हैं इज इक्वल्स टू F2 बाई F2 ये लेंथ है, इसके अपोजिट में एंगल है पाई माइनस बीटा. तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस बीटा इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन पाई माइनस गामा. सॉरी F3 वाला तो हो ही चुका है. The only one left is F1, है ना, F1 लिख लेते हैं. F1 और उसके अपोजिट में है पाई माइनस अल्फा साइन, है ना. तो साइन पाई माइनस अल्फा. बट वी नो दैट साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, and hence this entire thing can be written as one equation here which we call as Lami's theorem, and that we can write as F1 by sin alpha equals to F2 by sin beta is equals to F3 by sin gamma. So these relations can also be used to solve equilibrium problems. तो मैंने आपको दो अप्रोच बताया. You can either find components and solve for whatever variable is unknown, or you may use Lami's theorem. We will see one example of each, or we will take one example and we will solve it by both the methods. But before that, please note this down. Okay, so let's solve one numerical based on this by both the methods. Okay, so this is the question we have. Suppose initially we have a mass of 3 kg in equilibrium. Now we do what? We start pulling at this point with a force 40 Newton. So at some point of time, it will come in equilibrium like this. This force will be 40 Newton. So what we have to find
is the angle at which it will come in equilibrium. This is what we have to do. So this is a very simple application of equilibrium of concurrent force at this point. So at that point, you can draw the free body diagram of those 3 points. Those 3 forces acting on the body. So 3 kg, 30 Newton is acting downwards. Here we have tension T1, suppose that T1 is here also. So this T1 or tension is simply equal to 30 Newton because this entire body is in equilibrium. और single अगर दो forces के equilibrium की बात करें तो we have talked कि दोनों forces जो हैं वो equal और opposite होने चाहिए. So T1 comes out to be 30 Newton. यहाँ तो हम लोग 40 Newton लगा ही रहे हैं. And what should be tension here? We do not know. है ना? ये भी निकालना है हम लोग. This is also we have to find. अब ये वैल्यूज हमको निकालने हैं. उसके लिए फर्स्ट थिंग वी डू कि जो थीटा हमको पूछा गया वो यहाँ पे लिख देते हैं. पहले मेथड से बनाते हैं. दैट मेथड में हम लोग को इस फोर्स को क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा. दिस विल बी टी कॉस थीटा एंड दिस विल बी टी साइन थीटा. सिंपली T cos theta is equals to 30 Newton and T sin theta equals to 40 Newton for equilibrium. First we can do is tan theta we can find and that will be equal to 4 by 3. And if you somehow remember 3, 4, 5, this is 53 degree, this is 37 degree. But here we have to find P by B. P by B 4 by 3 is tan 53. So theta must be 53 degree. So we have found theta also. And we can find T by squaring and adding these two. If you square and add, T square comes out to be, or you can write one more step and write T square cos square theta plus sin square theta comes out to be 30 square plus 40 square, and finally because this becomes 1, T square comes out to be 2500, and then T is 50 Newton. So tension in that string is 50 Newton. This we have solved using component form by finding the component of tension along x and y. But this could have been solved using Lami's theorem also. Suppose this is theta, then you know that this angle is 90 plus theta. Yes or no? This angle is 90 degree. Then what is this angle? This is simply, see, this angle is 90 minus theta. This is 90. So this is 180 minus theta. If you add all these, you will get 360 degree. Yes or no? So we have found all the angles. Can we use Lami's theorem to find T and theta? Yes. Let's find that. T by sine 90. T upon sine 90 is equals to 30 upon sine 90 plus theta. Sine 90 plus theta is equals to 40 upon sine 180 minus theta. If you know sine 90 is 1, so this will be simply t. So any of these values will give you the value of t. So t will be simply 30 upon sine 90 plus theta is cos theta, and also equal to 40 upon
Sine 180 minus theta is sine theta. So if you solve these two, you will get tan theta equals to 4 by 3, which is simply theta equals to 53 degree as we have found in the previous by the previous method. Next, can we find t? If tan theta is 4 by 3, can you find cos theta or sin theta? Yes. Sin theta will come out to be 4 by 5. And if you know sin theta is 4 by 5 and if you put it here t equals to 40 upon 4 by 5, 4 cancel it by 10, so tension comes out to be 50 Newton. Tension जो है वो 50 Newton आया. So this is how we solve the equilibrium of concurrent forces by both the methods. I hope you have understood. Please note this down.